tableau.com and just press enter. It will take you to the home page. Here you have to click on create web authoring. So anyone who is able to follow, make sure you do that. Go to the home page, log in, go to create and click on web authoring and stay there. So after clicking, it will show you a UI where it is asking you to connect to a data. So Tableau needs to connect to a data before you can create any visualizations. Right? You have to have a data on which you want to create the visualizations. Next thing you have to do is download the data. Okay? I'm sending you a link to download the data now. Sending the link here in our ask or answer. This is the link that you have to click on. This is how that link will look like. The GitHub link. Once you open that link, on the right side here, you'll see a download button. Okay, you have to click on that download button. People who might find github.com confusing, I will also send the link. I'll also send the file directly to our channel, this ask or answer. Okay, maybe let's do one thing. Let's use this data visualization part here. Okay, so I'll just copy and put it here. So in data visualization channel, I'm posting that link. You can download it from here as well. So here's the download button for downloading the file. If you're not able to download it from the GitHub, you can download it directly from the Discord channel that we have. File download karo, let me know once you're done. Yes, Akshat. Okay, file downloading done. All right. जिनका फाइल डाउनलोडिंग हो गया हो, they can upload the file. You can click here on upload from computer. कभी कभी यहाँ पे कनेक्टर्स पे चले जाते हैं. Make sure you are in this tab. Files के टैब पे हो आप. Files के टैब पे हो and then go on the upload from computer. Select that file that you have downloaded just now, mall_customers.csv. Download करने के बाद it will, you have to wait for some time for it to process. This is how it looks like. Let me know once you are here. Upload करने के बाद में you will upload and open this view जहाँ पे आपको customers दिखेंगे. यहाँ पे कुछ information दिखने वाली है. I'll explain all of this information. Let me know once you're done. Done, sir. Done? All right, great. So let me explain this view to you now. ये जो व्यू है आपके सामने, this is your data source view.
The data that is going to be used is going to be shown here, or the table that is going to be used, that is going to be shown in this main part here. If you want more data, you can add more data to this particular data source. But for now, we are not going to add more data. We'll learn about adding more data and all in the next sessions. For now, just imagine that there is only one table, which is the mall customers table. Below, you will see the information about that. So there's only one table, which is the mall customers table. Okay, you have to click anything here. This is the name, and these are the fields. यहाँ पे fields है उसके. Scroll करने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो I'll just make it bigger here like this. Okay, so these are the fields, or these are the columns that are present in my table, which is mall customers. Customer ID present है, gender, age, annual income, spending score present है. ठीक है, these are some columns, these are the columns that are present in the mall customers. You can also see a preview of the table or the data here on the right side. See here, so this on the right side, you can see the table preview. You can say update now and it will show you the table directly here. Okay, जब data बहुत बड़ा होता है, तब you'll be able to see only 100 rows. If there are only less than 100 rows, then that's all you can see. See here, how many rows you want to see. So 100. जब data बड़ा होता है, make sure you don't have big number here. So 100 is enough. Customer ID, gender, age, annual income, or spending score. All right. Anything that looks blue in color, ठीक है, ये ब्लू कलर में हैश लिख के है, लेकिन ये ब्लू कलर में एबीसी लिखा है, ये ब्लू कलर में. ये जो हैश लिखा है, ये ग्रीन में, ये ग्रीन में और ये ग्रीन में. ठीक है, द आइकॉन्स दैट यू सी हियर, दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू. ओके, एनीथिंग दैट इज ब्लू मींस इट्स अ डिमेंशन. कैटेगरिकल वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा. नाउ ऑल्दो दिस इज अ नंबर, वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस एज अ categorical variable. Sometimes Tableau might be able to identify it for you, but अगर Tableau identify नहीं कर पाता है, you have to click here on this drop down button and tell what it is. Okay, so you have to change the data type here. Okay, you can change the data type to one of this number, whole, numeric, and all of that. Okay, we'll get to that in detail later. Okay, but for now, just इतना समझ लो कि यहाँ पे आपका table है, and these are the columns in your table. Next is you have to click on this sheet 1. Okay, कहाँ गया हो, ये हो गया डेटा सोर्स. ऑलराइट, यहाँ पर आपको जो बॉटम में दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेटा सोर्स दिख रहा है, और राइट साइड में शीट 1 दिख रहा है. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वर्कशीट दैट यू वांट टू क्रिएट. ऑलराइट, यू कैन क्लिक ऑन दैट वर्कशीट. शीट 1 पे क्लिक करो अभी आप लोग भी, सब लोग. क्रिएटिंग एक्सट्रैक्ट लिख के आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको. एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वो सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. अभी के लिए बस इतना समझ लो, एक्सट्रैक्ट क्रिएट क्रिएट करने की वजह से जो विजुअलाइजेशंस हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, वो थोड़े से फास्ट हो जाते हैं. अगर एक्सट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं विजुअलाइजेशंस वगैरह, क्योंकि वो लाइव कनेक्शन पुल करते रहता है बार बार. Okay, so it's always suggested that you have an extract created and then do the visualization. This is the view that you will be seeing. दिख रहा है सबको? Everyone here, let me know. सब लोग यहाँ पे आना चाहिए. सर कहाँ पे है वो? मैं ये वाला न्यू वर्कबुक, इस पे शीट में क्लिक करना है आपको, बॉटम में जो शीट है वहां पे. शीट 1 पे है. हाँ, शीट 1 पे.
Everyone there? Yes, sir. All right, great. Now you have to click on this file and say publish as. Again, click on the file and say publish as. Alternatively, you can also say Control S. We are trying to save this right now so that हमारा जो भी काम रहेगा over the session that we are going to build, it will be saved in a particular workbook. Okay, let's give it a name. Let's call it a mall report. Call whatever you want. Check these first option here. Show sheets as tabs. Even if it's unchecked, that's fine. You will be only seeing a dashboard. But if you want to show the reports of the sheets on your uh, publish the sheets as well, you have to check this. So अभी के लिए इसको check करके रख रहा हूँ मैं, ठीक है? So all of you give name, इसको check mark को check करो and click on publish. Okay. Everyone saved it? Great. Now let's try to understand कि जो UI है हमारे सामने इसमें क्या क्या चीजें हैं so that next time जब मैं word बोलूँ तो आपको समझ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? Everything that is here is called as a menu bar. ठीक है? File, data, worksheet, dashboard, analysis, map, format, help. This is part of menu bar. When I'll say menu bar, you should know that I'm talking about this particular bar here. Okay. Second is a toolbar. When I'll say toolbar, you should be looking at these tools that are present here. ये हो गया आपके toolbars. Notes ले रहे हो तो notes ले लो. ऐसी एक रफ डायग्राम बनाओ. Make sure that you know that this is a menu bar. This is a toolbar. मेन्यू बार में आपको कॉमन ऑप्शंस मिलेंगे सेव करने के, डेटा को रिफ्रेश करने के या फिर नया डेटा सोर्स लोड करने के, वर्कशीट के कुछ तो ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे, टाइटल दिखाना है नहीं दिखाना है, डैशबोर्ड के कुछ ऑप्शंस रहेंगे, एनालिसिस करने के कुछ ऑप्शंस रहेंगे, सो ओके, मैप के भी रहेंगे और फॉर्मेटिंग के भी रहेंगे जो हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे. सो दैट्स योर मेन्यू बार, दिस इज योर टूल बार. टूल बार में ये जो आइकॉन है, दिस आइकॉन इज used when you're working with huge data या फिर बड़े when you're working with data which is taking a lot of time to load and refresh. At that time what you can do is you can pause the updates so that जब आप कोई भी एक्शन करते हो तब के तब डेटा लोड नहीं होता, it will be loaded when you want to load it. For now I'm not pausing it, I'm letting it run as if it's running. So ये टू बार्स या फिर जो वर्टिकल बार दिख रहे दो, इसका मतलब है कि एनिमेशंस होने दे रहा हूं मैं. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी अपडेशन. ओके, बाकी हम लोग एक एक देखेंगे धीरे धीरे.
नेक्स्ट इज दिस, लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं डेटा पेन या फिर डेटा पैनल। इसमें दो ऑप्शंस दिखेंगे आपको, एक है आपके एनालिटिक्स का, डेटा के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे हम लोग अभी के लिए। यहाँ पे आपको ऊपर डेटा सोर्स दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ बॉटम पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिखाते हैं, डेटा सोर्स को रिफ्रेश करना है अगर आपका डेटा चेंज होता है। जैसे आपने डेटा अपलोड नहीं किया, बैकएंड में किसी डेटाबेस से कनेक्ट किया और नया डेटा अवेलेबल है, तो आप डेटा रिफ्रेश करोगे ताकि नया डेटा आ जाए आपके पास में। ओके, नहीं तो नया डेटा ऑटोमेटिकली तो पुश नहीं होगा आपके पास, यू हैव टू डू अ रिफ्रेश टू गेट द न्यू डेटा। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं फाइल, तो नया डेटा आने का कुछ चांस ही नहीं है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम डेटा। राइट, यू कैन आल्सो चेंज द डेटाबेस एंड ऑल। ओके, यहाँ पे टेबल्स होते हैं, सिर्फ एक ही टेबल है इसलिए सिर्फ एक टेबल का डेटा दिखेगा, इंफॉर्मेशन दिखेगी यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपको डिमेंशंस दिखेंगे। ओके, डिमेंशंस का मतलब क्या होता है, जो आपके ये होते हैं, अ, जैसे कि नेम ऑफ द पर्सन, आईडी। ओके, वो सारे होते हैं डिमेंशंस के एग्जांपल। कैटेगरिकल वेरिएबल जो हमने अभी तक पढ़ा है, दो आर डिमेंशंस। और इस लाइन के नीचे इज ऑल योर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या फिर मेजर्स, एज, इनकम, स्कोर, मेजर वैल्यूज, वी टॉक अबाउट बट दिस इज द काउंट या फिर नंबर उसका। इट इज एन रो नंबर ऑल गिवन, यू कैन यूज दिस वन फॉर दैट। So these three are important for now. Age, annual income or spending score. These three are present in the table. And customer ID gender है, जो दो चीजें और प्रेजेंट है आपके इसमें, ठीक है। दिस इज योर डेटा पेन। डेटा पेन के साथ में बाकी कौन से चीजें, राइट साइड में जो भी आपको दिखेगा बचा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज योर वर्क स्पेस, जिसमें ये सब चीजें। सो दिस इज योर वर्क स्पेस, जो अभी एम्प्टी है, जो जिसमें अभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज योर वर्क स्पेस। फाइल, सॉरी, ये मेन्यू बार, टूल बार और डेटा पेन को छोड़ के जितना भी दिख रहा है आपको यूआई में, दैट इज कॉल्ड एज योर वर्क स्पेस। ऑलराइट, एक बार नीचे के ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज योर डेटा सोर्स, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो लेफ्ट साइड के डेटा सोर्स पे, इट विल टेक यू बैक टू दिस पर्टिकुलर व्यू वेर यू अपलोडेड द डेटा, राइट। एंड दिस इज योर वर्कशीट या फिर फर्स्ट वर्कशीट। इस पर्टिकुलर फाइल को या फिर ये जो टैब्ल्यू का जो यूआई दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्कबुक। और एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स रह सकते हैं, जैसे एक एक्सेल में मल्टीपल वर्कशीट्स रह सकते हैं या फिर मल्टीपल शीट्स रह सकते हैं, एक्सेल शीट्स रहते हैं, उसी तरह से ये वर्कबुक है आपका। मेल रिपोर्ट जिसको आपने पब्लिश किया, दैट इज योर वर्कबुक। उस वर्कबुक में मल्टीपल रिपोर्ट्स रह सकते हैं, डैशबोर्ड्स रह सकते हैं और स्टोरीज भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्कशीट नंबर 1। इसी तरह से आई कैन ऐड मोर वर्कशीट्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस न्यू वर्कशीट, या फिर कंट्रोल अल्टर टी से भी, शॉर्टकट है वो। शीट 1, दिस इज, सेकंड इज वर्कशीट। यू कैन ऐड मोर वर्कशीट्स लाइक दिस, आई कैन क्लिक ऑन दिस, इट विल ऐड मोर वर्कशीट्स जो अभी एम्प्टी है, ठीक है। आई कैन ऐड मोर वर्कशीट्स लाइक दिस, click on this, I can add as many number of worksheets I want. I'm going to delete some worksheets now because I'm not going to use any of this. So let me just delete some of this. एक ही रखने वाला हूँ मैं, वर्कशीट 1। ये तो हो गया वर्कशीट ऐड करने के लिए। उसी तरह से यू कैन ऑल्सो ऐड अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड इज कलेक्शन ऑफ योर वर्कशीट्स। बहुत सारे वर्कशीट्स एक साथ जब आप ड्रैग ड्रॉप करते हो अलग अलग पोजिशन में, दैट बिकम्स योर डैशबोर्ड। डैशबोर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग बाद में। यू कैन ऑल्सो क्रिएट स्टोरीज इन टैब्ल्यू। ओके, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? No, sir. गुड।
Pretty straightforward, right? Now let's try to understand जो वर्क स्पेस है यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है. सबसे ऊपर है कॉलम्स, उसके बाद में रोज. एज यू कैन सी हियर, हमारे टेबल्स में कॉलम्स कैसे रहते हैं, वर्टिकल होते हैं, राइट? सिमिलरली यहाँ पे आइकॉन भी दिए हुए हैं, तीन वर्टिकल बार्स है और ऊपर यहाँ पे तीन डॉट्स है. इट इज बेसिकली टेलिंग यू कि these are the things that should be present as columns in your table. रोज का मतलब होता है उसमें रोज क्या क्या रहने वाले हैं आपके. ठीक है, तो this is called as a column shelf. Okay, it's a shelf. This is called as a row shelf. Okay, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा एक पेजेस, फिल्टर्स और मार्क्स. फिल्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, अगर आपने कुछ डेटा फिल्टर्स ऐड किए तो वो फिल्टर्स में जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज फिल्टर्स शेल्फ. ओके, एंड दिस इज अ मार्क्स कार्ड. Okay, इसको बोलते हैं कार्ड. लुक्स लाइक अ कार्ड. दैट्स व्हाई these are the shelves. कॉलम, रोज एंड फिल्टर शेल्फ. पेजेस शेल्फ भी है. पेजेस के बारे में हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी चीजें एडवांस तब पढ़ेंगे. ओके, बट फॉर नाउ दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. कॉलम्स, रोज, फिल्टर्स एंड मार्क्स. मार्क्स क्या हेल्प करता है हमें? जो भी हमारा विजुअलाइजेशन होता है उसमें अगर आपको कलर्स डिसाइड करने हैं, साइजेस डिसाइड करने हैं, लेबल क्या रखना है, टूल टॉप क्या रखना है, टूल टिप क्या रखना है, ये सब आपको मार्क्स कार्ड से कर सकते हैं आप. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत बेसिक प्लॉट बनाएंगे जिसमें हमें क्या करना है. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू. ओके, जिसमें हमें क्या करना है, हमें जेंडर वाइज एनुअल इनकम एवरेज कितना है वो पता करना है. ठीक है, अश्मिता प्लीज कम ऑन टाइम. ओके, यू आर कमिंग लेट एवरी डे. लेट. So what we want to do is we want to have two plots like this. ये हमारा पहला प्लॉट ऐसा रहेगा, सेकंड प्लॉट ऐसा रहेगा. Here I want male, here I want female. Okay, and what is the average income इनका. Okay, so average income of male, average income of female, ये मुझे प्लॉट करना है अभी. So I'll go back here. Now what is this? As you can see here, these are the genders and genders are like columns here. So I'll just select gender, drag करो और drop करो columns में. Okay, everyone do that. बीच बीच में सेव करते रहना है इसको. कंट्रोल एस से. सो दिस इज द जेंडर, जो आपका डिमेंशन है. आपने इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया. नेक्स्ट, आई वांट टू चेक व्हाट इज द एनुअल एवरेज इनकम. ओके, तो एवरेज इनकम को ड्रैग करना है ऐसे और रोज में ड्रॉप करना है. सो वंस यू डू दैट, this is a bar plot that you are going to see. Now the bar plot that you're seeing, it is showing sum of the annual income. मतलब क्या हो रहा है, आपका जो टेबल है, आपका टेबल कौन सा है, दिस इज योर टेबल, राइट? दिस इज योर टेबल जहाँ जेंडर है, एज है, एनुअल इनकम है, स्पेंडिंग. तो उसने क्या किया, जितने भी मेल है उनका एडिशन किया एनुअल इनकम का, और जितने भी फीमेल है उनका एडिशन किया. एंड इट इज शोइंग दैट एज अ बार प्लॉट हियर फॉर नाउ. ठीक है, यहाँ पे लिखा है सम, ओपन ब्रैकेट, एनुअल इनकम. ठीक है, अभी इसको चेंज करना है हमें. वी वांट एवरेज, सम नहीं यूज करना है हमें. राइट, सम विल जस्ट टेल अस कि सम क्या है, सबका सबका एडिशन दे रहा है वो. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एडिशन ऑफ ऑल द annual incomes. We are interested in average annual income of male versus female. So I'm going to click on this drop down here on this button. यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में यहाँ पर आइकॉन है वो. ठीक है, आई विल शो इट अगेन. यहाँ पे आइकॉन है वो.
drop down का. You click on that. I'll go to measure because it's a measure. Okay, and I'll tell average select करना है यहाँ पे. So as soon as I click that, this time it will show me the average now. Okay, what is this? This is average annual income, female versus male. As you can see here, average annual income of female is 59.250. जब मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो दिख रहा है मुझे. Average annual income of male is 62.27. This is in $1,000. Okay, so this is $62,000. This is $59,000. So as you can see, there's a difference in the average salaries based on the genders. Okay, we all know that there is a disparity in market, which many companies are trying to uh, not have this kind of a disparity in the pays. Okay, so this is a plot, which is this a bar plot or histogram? Bar plot. Good, Bar plot. right. So this is a bar plot. All right. Let me see if this here. Now, what we can do more is there are a couple of options that we have here. You can click on this marks card automatic, and here it is showing you some options. Automatically, it's a bar plot, but you can also change the type of plot you want to have. You can have it as a text. If you have it as a text, it will show a table like this. Still loading, I guess. So no, something wrong here. Mm, 1 second. Should I really do that? Mm, all right. Anyways, I'm not sure why it's not doing that, but by doing the text, it should show you the table. Why is it not doing that? All right, let's try to do another plot. Let's try to a line plot here like this. So line plot में, as you can see, line plot में आप लोग क्या करते हैं? Every point is connected. So line plot is usually used when you have time series data. यहाँ पे line plot नहीं plot करना चाहिए आपने. I'm just showing you कि कर सकते हो आप. ठीक है? I'll just go to the bar क्योंकि हमें bar plot ही चाहिए यहाँ पे. So this is the correct plot to show. Bar plot. All right. You can also change the colors here. So click on the color. You can change the color to whatever you want, like this. Okay. Sorry. Now you can also change what you want to show on the tooltip. If I mouse over, अभी tooltip पे क्या दिख रहा है? Gender, average income. I can also change this. I can change this and say, uh, change gender to maybe sex, and this average to mean annual income. Okay. ये जो right side में इसको change नहीं करना है. Keep this as it is because that is a formula. And as soon as I do a mouse over, it is changing the labels now. So pretty straightforward and easy way. हेलो। Yes. अब वो टूल टिप कहाँ से चेंज किया सर? ये टूल टिप पे क्लिक किया मैंने, जो मार्क्स कार्ड है हमारा वहां पे टूल टिप्स पे क्लिक किया मैंने, यहाँ हाँ पर ओके। आई जस्ट चेंज्ड इट. हाँ आई कैन ऑल्सो इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं उसका. यू कैन ऑल्सो इंक्रीज इट्स फॉर्मेटिंग. यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग हियर. यहाँ पे आप उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो. सो इट हैज अ प्रीटी वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस.
ओके, अभी आपको क्या करना है, पेंडिंग स्कोर का एवरेज निकालना है. ऐड अ न्यू, सो बिफोर यू डू दैट जस्ट गिव अ नेम टू दिस शीट. ठीक है, इस शीट को नेम दे दो. इसका नाम दे दो आप जेंडर वाइज एवरेज इनकम. ओके, नाम दे दो जेंडर वाइज एवरेज इनकम, जस्ट प्रेस एंटर हियर. शीट का नाम भी यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा. सो दिस इज जेंडर वाइज एवरेज इनकम. राइट, सो दिस इज माय फर्स्ट शीट. अभी आपको क्या करना है, एक और नया शीट ऐड करना है, वर्कशीट. क्लिक ऑन अ न्यू वर्कशीट हियर and plot gender wise average spending score. Let me know once you're done. Excuse me. Done. Okay. So what you did, you just dragged and dropped the gender here, drag and drop the spending score here, and just checked. Did a right click here, or maybe click this drop down here. Measure ko you converted into a average, and you said gender wise average. So as you can see here, the story is female are having more spending score as compared to male. Okay, so this first plot was the average income, and second is the spending score. This is some database for the customers where we are showing who is spending more at that particular location or that particular mall. Okay, give it a color. Just change the color to something like orange or something. Yeah, and keep everything else as it is. Okay. Now we also have age. Okay. Now what we can do is we can do a distribution plot, or we can do a histogram of age. Let's try to do that. So I'll add a new worksheet here, and I want to do a histogram. Okay. Now we all know that when we want to do a histogram, histogram में क्या क्या होता है हमारे पास. हिस्टोग्राम में कुछ ऐसा दिखता है हिस्टोग्राम. ओके, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं. ओके, सो इफ दिस इज एज, देन वील हैव स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू मे बी 100. ओके, उसके बाद में यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ बार्स होते हैं या फिर कुछ टिक्स होते हैं ऐसे. सो मे बी दिस इज 20, देन दिस इज 40, देन दिस इज 60, 80, 90, 100, ऐसे कुछ टिक्स होते हैं यहाँ पे. और बार्स हमारे ऐसे होते हैं यहाँ पे. करेक्ट, हिस्टोग्राम में बार्स कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे. दिस इज हाउ द हिस्टोग्राम लुक्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, नाउ what we have here is age, which is just one variable, which is a measure. इसका histogram बनाना है. So what I'm going to do is I'm going to drag and drop it into the columns first. Okay. और यहाँ पे show me का option है, इस पे click करता हूँ मैं. Okay. Let me see if it gives the option. And it is showing me an option of histogram here. I've clicked on show me,
and then there's the option of histogram which is not disabled, ये enabled है. So as soon as I click here, it's going to do two things. First, it's going to create a bin field. यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो नीचे लिखा हुआ है फॉर अ हिस्टोग्राम डॉट व्यू ट्राई वन मेजर क्रिएट अ बिन, फिर आइकॉन है वहां पे फील्ड नॉट एबल फॉर ऑल अदर इमेजेस लिखा हुआ है यहाँ पे. So I'll just click on this for now. As soon as I do that, it shows me a histogram. Okay, so this is my histogram. These are my ages and these are my counts for every ages. क्या हुआ यहाँ पे? Let me show it to you again. सबसे पहले मैंने क्या किया, एज को सिलेक्ट किया. I've dropped it into the rows. Okay, after that I have gone here, show me पे click किया, went to histogram and I clicked the histogram here, and this is what it is giving me. Okay, हुआ क्या है यहाँ पे, जो मैंने रोज में एज ड्रॉप किया था दैट हैज बीन रिमूव्ड, और कुछ तो कॉलम्स में गया. there's something added to the columns and there's something added to the rows here. Okay, the thing that is added to the column is age open bracket bin close bracket. यहाँ पर एक नया डिमेंशन ऐड हो गया है विच इज एज बिन. ये नहीं था प्रेजेंट यहाँ पे पहले. यहाँ पे पहले सिर्फ कस्टमर आईडी था हमारे डेटा पेन में और जेंडर था. This age was not present. This age was created when I clicked that histogram. You can also do that manually. You can also create that manually. Okay. All it has done is इस एज में जितने भी वैल्यूज थे उसको स्प्लिट किया उसने इक्वल डिस्टेंसेस पे. दिस इज 20 to 25, 5 का डिस्टेंस लिया उसने. सो दिस 25 to this 30 or maybe something else. So this is 24.6, this is 28.6, 32.6 average, 36.6 average, 41. ठीक है. So it automatically did that scaling for you. Okay, you can also change the scaling by going on this bin option here. You can say edit. Okay, और यहाँ पे bin का size है 42 4.1. You can change this to 5. Okay, as soon as I do that, now you'll see the bin size getting changed here. Bin size 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, and so on. This is something that we are more used to see. Okay, so these are the bins that we need. Histogram में bins are important, right? Bins are important in histogram. Histogram में हमें bins चाहिए. Bins के बिना histogram निकाल ही नहीं सकते हम लोग. That's what is done here. Bins निकाले, which were your columns or rows है. That is your count of age. Now you can also change this to see कि 15 to 20 के बीच में average age कितना है, 20 to 25 के बीच में average age कितना है. But this is the histogram. Histogram में हमें counts की जरूरत होती है, इसलिए this is what the histogram is going to look like. Now let's change the bin size to 10 so that we can have fewer bins here. इसको मैं 10 कर देता हूँ तो कम बिन्स आ जाते हैं. तो 10 to 20 is one bin, 20 to 30 is one bin. तो नंबर ऑफ बिन्स मैंने रिड्यूस कर दिए, बस उतना ही चेंज किया, नथिंग एल्स. राइट, लेट मी नो वंस यू ऑल आर एबल टू फॉलो दिस. इतना करो आप लोग, उसका बिन साइज कन्वर्ट चेंज कर दो 10 में. इश्यूज में कंट्रोल एस करते रहना, सेव करते रहना. एवरीवन हियर? यस, नो? ओके, ऑलराइट. सो इसमें कितने लोग हैं? इसमें 12 लोग हैं जिनका 10 to 20 के बीच में 12 लोग हैं. मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 10 30 to 40. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी कि ये जो
30 to 40 है, इसमें मेल कितने और फीमेल कितने हैं वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ऑटोमेटिक को चेंज करके मैं बार कर देता हूँ, बिकॉज इट्स अ बार प्लॉट। आई मीन, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अभी बिन नाम का डिमेंशन क्रिएट ही कर दिया, इट हैज converted itself into a bar plot now, because this is one dimension, this is one dimension, this is second dimension, this is third dimension, and so on. Okay, sorry, dimension values, not dimensions. All right, next I want to see कौन कितना है, या how many males are present, how many females are present. What I can do is I can select this gender, drag करना है और drop करना है color पे. Again, okay, let me just tell you, gender को select करना है, drag करना है और drop करना है color पे. As soon as I do that, the plot is changing. Okay, let me just show it to you again. जेंडर को सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है कलर पे. as soon as I do that, the color is changing. ठीक है, राइट साइड में आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा है, या फिर एक नया यूआई कुछ तो दिख रहा है. यहाँ पे दो कलर दिख रहे हैं, उसके सामने नेम लिखे हुए हैं कुछ तो. ओके, सो दिस इज ब्लू का मतलब होता है फीमेल, ऑरेंज का मतलब होता है मेल. यस, यस ईशान. सर वो एक बार ये यानी वो 10 to 20 कैसे किया बताओ सर। करेक्ट. ये ओके, जो तो ये बार प्लॉट है। एज, या एज पे क्लिक करना है यहाँ पे ऐसे, और इसको एडिट करना है. ओके, एडिट करना है, और यहाँ पे जो बिन साइज है, जो आपकी 4.1 रहेगी बाय डिफॉल्ट, उसको चेंज करना है, 10 करना है उसको. ओके ओके, सर। ओके नेक्स्ट जेंडर को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है कलर पे. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, जो आपका पहले बार प्लॉट था या फिर जो आपका पहले हिस्टोग्राम था जिसमें दिख रहा था कि दोनों मिक्स, यहाँ पे भी पता चल रहा है कि कितने मेल है और कितने फीमेल है. ठीक है, ये 10 to 20 के बीच में कितने फीमेल है और कितने मेल है. ऑरेंज कलर्स आर योर फीमेल्स, ब्लू कलर्स आर योर मेल्स. आप कलर्स चेंज भी कर सकते हो. यू कैन क्लिक ऑन दिस कलर आइकॉन, से एडिट कलर्स. ओके, और यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन चेंज कर सकते हो आप. अगर आपको फीमेल को कुछ और कलर देना है, आप चेंज कर सकते हो कलर्स वगैरह यहाँ से. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, तो वो आप बाद में कर लो, एक्सप्लोर करोगे तब सीख जाओगे. ठीक है, देयर इज नथिंग टू डिफिकल्ट अबाउट दैट. ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो बार्स है, ये बार्स के ऊपर हमें काउंट भी दिखाने हैं. लेट्स से, ठीक है, ये अभी माउस ओवर करके देखना बहुत मुश्किल जा रहा है, फिर इट्स नॉट इनफ. सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द काउंट्स. अभी काउंट किसका दिखाना है हमें, यहाँ पे एज का काउंट दिखाना है, राइट. सो हमें एज का कॉलम चाहिए जो जाएगा लेबल पे. ठीक है, जो जाएगा लेबल पे. ओके, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको. एज का कॉलम जाएगा लेबल पे. ओके, और यहाँ पे आप उसको करोगे मेजर काउंट. ठीक है, तो देर आर 9 फीमेल, 9 मेल्स, so there are 9 female here and 3 males here. Okay, काउंट्स पे चेंज किया मैंने, फिर से दिखा देता हूँ आपको. आई हैव सेलेक्टेड, आई हैव गॉन टू एज, नॉट द बिन्स हियर. एज जो मेरा मेजर है उस पे गया मैं, ड्रॉप्ड इट ऑन द लेबल, एंड देन चेंज द सम हियर. इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, क्लिक से भी आता है वो. ठीक है, आई थिंक सो आता है. ओके, सो मेजर, मेजर में काउंट पे क्लिक करना है हमें. दिस इज हाउ यू सी द काउंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेपरेटली. I'm going to say Control S save here. इसको नाम देता हूं मैं अभी. दिस इज एज डिस्ट्रीब्यूशन.
Now what I'm going to do is I'm going to add filter here. Okay, let's say हमें स्पेंडिंग स्कोर का फिल्टर रखना है, तो स्पेंडिंग स्कोर जो है उसको ड्रैग करूंगा मैं और फिल्टर्स में ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं. Do you want to see all options? Do you want to have some? Do you want to have count? What exactly do you want? Okay. So for now, I will say average in. Okay. Because जो भी उसका एग्रीगेट रहेगा उसके एवरेज पे मुझे फिल्टर करना है. ठीक है, so एवरेज पे नेक्स्ट करूंगा. तो this is how the filter is going to look like. Okay. Let's say I want people whose spending score is more than 50. जिनका spending score 50 से ज्यादा है वही लोग चाहिए मुझे. ठीक है, I'll say apply and I'll say okay. As soon as I do that, everyone whose spending score is less than 50 is gone. यहाँ पे नहीं है present अभी वो. ठीक है, if I want to remove the filter, I can just do this, click here, I can do edit the filter, I can reset here like this. Reset करते ही should go back. It's not going. Anyways, I can just do this like this, drag and drop. Okay, say okay to this. So now the result is back. This is a filter for a measure. Okay, this is filter for a measure. ठीक है, I can also do a filter for gender या फिर customer ID. Let's do a filter for gender. Drag and drop here gender पे. यहाँ पे options आते हैं फिर male, female, all. If I only want females, I can just uncheck female here like this. For males, I will just say okay. Females चले जाएंगे, सिर्फ male present रहेगी यहाँ पे. Okay, only males are present here. Obviously वो color भी change हो गया उसका, which was not intended, but that's fine. Yeah. You can also say show the filter. So when you say show the filter, you can say show filter and the filter shows up on the right side. यहाँ पे ऐसे, ठीक है, male, female. All right. I'm just going to pause here for some time and I want you to try this part, इतना part at least, on spending score. Spending score पे आपको distribution बनाना है ऐसा. Just add a new worksheet. किसी को फॉलो करना है मेरे साथ में तो फॉलो करो आप, अगर आपको खुद से ट्राई करना है तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप. First, select the spending score, drag and drop it on the rows. Next, go to the show me option, go to the histogram here, click on the histogram. Next, you should see spending score bin, which is here. थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो नाम आएगा वैसा ठीक से. तो स्पेंडिंग स्कोर बिन ऐसे लिखा हुआ है, ये बिन है, इसको चेंज करना है. या edit. Now this bin size is 6.4. I'll just change this to 20 for now. Okay. Yeah, if 20 is too big, let's just change this to 15 maybe. This is my bin size, spending score. Next, select gender, drag and drop on the color. Okay. Change करना है बार में. उसके बाद में select करना है हमें spending score को फिर से ड्रॉप करना है लेबल पे. Okay. अभी ये हो गया सम. इस सम को चेंज करना है to be a count here like this.
So this is your all right. Let me know once you're done till here. Spending score के लिए. इसको बीच बीच में सेव करके रहना है. Yes. सर फिर से दिखा सकते हो क्या, मतलब नेटवर्क इशू था स्पेंडिंग स्कोर के लिए. ओके, फिर से करते हैं हम लोग. ओके, यस. स्पेंडिंग स्कोर को मैंने सिलेक्ट किया, ड्रैग्ड एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द रोज हियर. उसके बाद में आई वेंट टू शो मी. शो मी में आई क्लिक्ड ऑन द हिस्टोग्राम आइकॉन हियर. After that, there is a new column which was created, spending score bin. इस पे क्लिक किया मैंने and I said edit and I changed the bin size to 15 here. I close this. Next, I got gender. I dropped it on the color. उसके बाद में I went to the spending score again, dropped it on the label और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट किया काउंट में. Okay, all good till here? Yes, no? Okay, all right. Now let's go to a scatter plot कैसे बनाते हैं. ठीक है, स्कैटर प्लॉट में क्या होता है हमारा. ओपन दिस हियर. एक्स वैल्यू प्लॉट्स होते हैं इसमें. ठीक है,
This is how scatter plot looks like. Correct? यहाँ पे एक मेजर होता है आपका और यहाँ पर एक मेजर होता है एक्स और वाई वैल्यूज. ठीक है. लेट्स जस्ट से मेजर यहाँ पे क्या है हमारा. दिस इज माय स्पेंडिंग स्कोर. ओके. दिस इज माय स्पेंडिंग स्कोर एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे रखता हूँ उनका इनकम. ठीक है. उनका इनकम मैं वाई एक्सिस पे रखना चाहता हूँ. लेट्स ट्राई टू डू दैट इन टैब्ल्यू. सो वाई एक्स एक्सिस पे क्या है, स्पेंडिंग. तो स्पेंडिंग लिया मैंने, उसको डाल दिया कॉलम्स पे. ओके. तो मेरा एक्स एक्सिस तैयार हो गया. वाई एक्सिस पे क्या है मेरा, इनकम. सो एनुअल इनकम लिया, पुट इट हियर. ओके. यहाँ पर एक ही वैल्यू दिखेगी क्योंकि हमें एग्रीगेशंस हो रहे हैं यहाँ पे सबके. ठीक है. सम हो रहा है दोनों का. नाउ if I want to have more values here, if I want to have more values here, I need to give a dimension जिसके अगेंस्ट मुझे कंपेयर करना है. लेट्स से मैं जेंडर डालता हूँ यहाँ पे, और जेंडर को कलर पे ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ. So I'll see two values here. One is for the male, second is for the female. pretty straight line दिख रही है यहाँ पे. ठीक है. स्पेंडिंग स्कोर जो है वो मेल का. ओके. सबसे पहले तो वी शुड कन्वर्ट दिस स्पेंडिंग स्कोर फ्रॉम सम टू एवरेज. ठीक है. लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट टू एवरेज. Same way for the annual income also, क्योंकि sum will not give us the right number. Average is something that is good to compare. Okay, so this looks fine. तो मेल जो है उनका एवरेज इनकम ज्यादा है लेकिन स्पेंडिंग स्कोर कम है. फीमेल जो है उनका एवरेज इनकम कम है और स्पेंडिंग स्कोर ज्यादा है, which was also seen here in the first two charts. करेक्ट. जो बार प्लॉट्स हमने सेपरेट सेपरेट प्लॉट किए थे उसमें भी वही दिख रहा था हमें, और ये स्कैटर प्लॉट में भी दिख रहा है वो हमें. ठीक है. बट वी वांट एवरी डेटा पॉइंट के लिए, एवरी डेटा पॉइंट के लिए अगर चाहिए होगा तो ऑल आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू नाउ रिमूव दिस जेंडर फ्रॉम हियर. ओके. आई एम गोइंग टू पुट अ कस्टमर आईडी जो जाएगा आपके यहाँ पे. सो बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं अभी यहाँ पे, बट आई थिंक यू कैन जस्ट चेंज दिस कलर हियर. Don't want anything here. Just check here how to convert this. So this is just a scatter plot for every customer. जितने भी customers हैं सबके यहाँ पे scatter plots आ रहे हैं. I want to convert this into text. See here how to do that. This is not something that we want to do. Label would be still okay. All right. So this is the scatter plot. All right. So all we did was, let me just do it again maybe. ठीक है. So we have this. I took the customer ID क्योंकि हमें हर एक का एवरेज एवरी वैल्यू का इनकम और स्पेंडिंग स्कोर चाहिए, और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं एवरी वैल्यू को हम लोग, कस्टमर आईडी से. सो जस्ट पुट इट ऑन द लेबल हियर लाइक दिस. दैट्स ऑल. क्लिक ऑन द लेबल्स. I can edit this one. So uncheck this. It will remove all the values from there, and this is my scatter plot now. Okay, as you can see in the scatter plot, most of the values are crowded in this area. Then there are some people who are having high income and low average score, low average spending. Then there are some people who are having low income but high average spending. You can also color code them. If you can just drag and drop the gender in color, you can see the color coding of that. Okay. So you can also color code them like this. This is हेलो cat. Yes. सर, वो लेबल कैसे हटाया? Okay. Label हटाने के लिए I went here, I clicked on the label. I said ये पहले शो मार्क्स था, आई वन चेक दिस, तो लेबल चला गया. ओके.
नाउ ये सब कुछ सेव हो गया है फॉर यू। नेक्स्ट सेशन में आपको स्पेंडिंग वर्सेस एज निकालना है, ठीक है? लिख लो आप लोग नोट्स में, स्पेंडिंग वर्सेस एज इज रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट सेशन, या फिर इनकम वर्सेस एज, दोनों में से कोई भी एक। अगर आप दोनों करते हो तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट डू वन, स्पेंडिंग वर्सेस एज, एल्स इनकम वर्सेस एज का स्कैटर प्लॉट आपको लेके आना है नेक्स्ट सेशन में। इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस से सेव करना है आपको, पब्लिश एंड सेव इज सेम हियर, एंड आई विल जस्ट शो यू वन लास्ट थिंग, इसको रिविजिट कैसे करना है। जस्ट अब ये मेरा आई हैव डन एंड आई कैन जस्ट क्लोज दिस, ठीक है? सेव किया मैंने बहुत बार, आई जस्ट क्लोज्ड इट, आई वेंट बैक टू दिस टैब्ल्यू का मेरा जो डैशबोर्ड है वो, so, मेरा साइंड इन है ऑलरेडी। आई वेंट टू माय प्रोफाइल हियर, अंडर माय प्रोफाइल I can see here mall report. Click on the mall report. यहाँ पर जो हमने थोड़ी देर पहले बनाए थे, जेंडर वाइज इनकम, जेंडर वाइज स्पेंडिंग, जेंडर वाइज सॉरी एज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेंडिंग स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेंडिंग वर्सेस इनकम, ये सारे आ गए। I can go and click on this edit here and I can start adding more things here, or I can continue my work. Okay, but make sure you are saving everything. All right, so that's it. I suggest you all to go back, try to revisit this, and let me know what you all think. And if you all promise me to bring that spending versus annual income, or spending versus sorry, spending versus age and income versus age in the next session, I can share the recording. Okay, लेके आओगे आप लोग? Should I share the recording? Yes, Okay. sir. Yes, sir. All right. So we are going to have a session tomorrow because we want to make up for the sessions that were missed earlier. ठीक है, 2-3 सेशन जो हमारे मिस हो गए तो वो कवर अप करने हैं, तो हमें कल सेशन है। I'll share this recording in some time with you all. Right? सर स्कैटर प्लॉट बना के लाना है ना? Yes, scatter plot. Spending versus age and income versus age. आपको कस्टमर आईडी सेलेक्ट करना है, जेंडर भी दिखाना है ऐसे. Okay? यस सर. All right. So that's it for today, and I'll see you all in the next session. You stop this recording.